आलेली ती, so that I have sorted out. हो का? ठीक आहे, ओके. लॅपटॉप आणला असेल तर चालू करून ठेव त्याला. वी कॅन सॉर्ट. हॅलो कंचन, हाऊ आर यू? हॅलो. My voice is coming? Yes, sir. Yes, sir. I'm fine. Okay, so what is the status of our practice? Is it continuing or you are facing some issue? हाँ सर, कंटिन्यू चालू है अकाउंट्स पेएबल तक. Show me your screen. Can you show your screen? Present your screen. Show me your T code FBL3N so that I can get the idea what transaction you have done it. This is the only way I can check whether are you doing the right way or you are using the another way. Okay, can you share your screen please? Sir, once I entered password that's showing user account not in validity date. I share this message with connecting dots. They said send me screenshot. Okay, so when you got this message? In afternoon. Today? Yes. Okay, today afternoon. Okay, not an issue. Then you can call tomorrow, and then tomorrow we can see your screenshot. Not an issue. Okay, so that's fine. Okay, now I am sharing my screen. I am sharing my screen. Just confirm me whether my screens are visible to you. यहाँ पे कोई तो login करके रख दो. Otherwise it will be if the network issue, then it will disconnect it and you will not get the recorded sessions. आपने कहाँ तक किया practice? Recording sessions झाले माझे. Practice. So you can start the practice. Otherwise your backlog will be increased day by day. थोडा ऑफिसचं लोड होतं ना. Okay. Not an issue. तुमचं कुठपर्यंत आलं? अपडेट? नाही, काही झालं. का नाही झालं काही? ते माझं लॉक झालेलं. म्हणजे फीस पे केलेली नव्हती. Okay. So that you can do this activity on time to time. Otherwise you will be the backlog will be increased by day. चाललेली आहे, पण आता ते नाही ना बंद झालं. ठीक आहे, ओके, नॉट an कालच issue. झालं. तू झालं बरोबर? पोस्ट जर्नल वॉचर पर्यंत आलंय. ओके, ठीक आहे. येस, माय स्क्रीन्स आर विजिबल. I have a question की आफ्टर हा कोर्स झाल्यानंतर आपण एंड युजर म्हणून जॉईन होणार की कन्सल्टंट म्हणून? कन्सल्टंट म्हणून जॉईन व्हायला पाहिजे. एवढं तुम्ही नॉलेज घ्यायला पाहिजे माझ्याकडून की तुम्ही कन्सल्टंट म्हणून जॉईन व्हायला पाहिजे. तुम्ही जेवढे क्वेश्चन विचारणार तेवढ्याचे आन्सर देणं इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, if you are not asking questions, then I cannot do anything. And whatever I am completing by topic to topic, you should have to do the practice on time, correct? Then and then you will be able to join as a associate consultant. सर फायनान्शियल कन्सल्टंट करणार आहेत ना इंटरव्ह्यूला? Yes. फायनान्शियल कन्सेप्ट तरी कशा विचारतील सर? फायनान्शियल कन्सेप्ट म्हणजे कुठल्या पद्धतीचे प्रश्न विचारू शकतात ते मोस्टली? See, that we have 50 common questions, 50 कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से ही पूछेगा. बट सामने वाला क्या पूछेगा? 50 तो कॉमन है, बट सामने वाले ने उसमें से अगर बाहर का पूछा तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? I cannot do anything ना. I will give you the question and answer 50 questions. So if you can prepare, then About at least about so that once we'll complete our FI and CO, then the questions comes what types of questions can be asked in interview. अभी तो मैं आपको बताया कुछ फायदा नहीं है और अभी आपको समझेगा भी नहीं उसमें. याद करना और पूरी बात याद. आपको दोनों याद होना चाहिए. टी कोड भी होना चाहिए, पाथ भी. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कंसल्टेंट करके ज्वाइन होने का है तो आपको सब पता होना चाहिए.
यही पता है, ये पता नहीं है, ये सब नहीं चलता है। पाथ भी पता होना पाथ भी पता होना चाहिए, टी कोड भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो सब पता होना चाहिए आपको। आप कंसल्टेंट करके जा रहे हैं, एंड यूजर करके नहीं जा रहे हो। अगर आपको अगर पता है तो आप किसी को कंसल्टेंसी दे पाओगे, नहीं तो कैसे कंसल्टेंसी दोगे आप? सामने वाले को अगर कुछ एरर आए तो वो एरर सॉल्व करने का आपके इसमें वो इफिशियन्सी पाहिजे, तरच तुम्ही कंसल्टंट म्हणून जॉईन होऊ शकता. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज ऑल द पैरामीटर्स. स्क्रीन पे जो भी आ रहा है वो आपको देखने का है, उसको स्टडी करने का है, ध्यान में रखने का है. हम जब एंट्री करते हो कितने सारे पैरामीटर हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे पैरामीटर आते हैं. वो सब हमारे को जरूरत नहीं है, फिर भी उसको जाके देखने का है. डॉक्यूमेंटेशन एसपीआरओ जब हम यूज करते हैं तो एसपीआरओ में डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने का ही देखने का है. उसमें तो सब लिखा हुआ है ना, आपको अलग से बुक यूज करने का है कि उसके लिए नहीं. तो आपको देखना आपका काम है, वो नहीं देखा तो मैं क्या करूंगा उसमें. मैं तो जब भी एसपीआरओ करता हूं मैं तो देखते हूँ डॉक्यूमेंटेशन. करेक्ट. Now, where we are in the last lectures, we have created the vendor master data. We have created a one vendor, and then the T codes are. देखो कितना प्रैक्टिस करते हैं तो हम कभी नोटबुक ओपन करके भी नहीं देखते हैं. जब हम लोग वेडनेसडे को नोटबुक बुक करते हैं ना, बंद करते हैं, तो सीधा उसको हम लोग मंडे को ही देखते हैं. इन बिटवीन हम लोग देखते ही नहीं है. लास्ट लेक्चर अभी मैंने देखा सर, आधे घंटे पहले, इसलिए तो गलत है ना, ये सिंपल है. अब 4 दिन के बाद लेक्चर देखोगे तो कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा? उसमें नहीं क्लियर होगा. सर्वर का इश्यू आएगा, आते रहेगा. आप कोई भी सर्वर लो, वो आते रहेगा. आपको आपका मतलब निकालने का है. इन शॉर्ट में आपको अगर आपका मतलब निकालने का आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे पास रीजन तो बहुत सारे हैं. मैं 100 आपको रीजन बता दूंगा, बट वो वर्क करेगा क्या? मेरे को जॉब देगा क्या? चलो ठीक है, अभी का टाइम तो आपने निकाल लिया, कोई भी रीजन मार के टाइम निकाल लिया आपने, बट ये टाइम निकाला हुआ टाइम आपको जॉब देने वाला है क्या? नहीं देने वाला है ना. तो इन योर लाइफ ऑल्सो यू विल हैव द एन नंबर ऑफ डिफिकल्टी. उसका आपका सॉल्यूशन आपको ही निकालने का है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसमें से. करेक्ट. So the problem solving skill is one of the important factor in our life. Okay, so that is another part. Now the T code are FK01. So we'll create one more vendor. Now we'll create one more vendor and we'll fill all the parameters. Those you are not written, then you can please write it down. Okay. So creation of vendor master data and the T code are FK01 and the path are SAP menu. Say SAP menu, accounting, financial accounting, accounts payable, then master records, and under the master records here you have the options as a 4 to 5 6 T code you have it here. Okay. FK01 for create, FK02 for change, FK03 for display, FK04 for display changes, 5 for block, unblock, and 6 for set for deletion indicator. So if I want to create a vendor, then I'll double click on FK01, say double click on FK01 here. Okay, then here create vendor initial screen. Now my company code are DN10. DN10 है ना? So enter the company code here as a DN10. And the account group. DN10 में हमने account group बनाए हैं. So in DN10 we have the account group as a purchase RM group, purchase consumable group,
packing material group, capital purchase group, one-time vendor, and service group. So now we are creating the vendor. The vendors are supplying to me the packing material. Okay, say select DN12 here. DN12 for packing material group. Okay, then next. Next will be complete information of vendor. Title will be company. Okay, and the name will be पैकिंग मटेरियल वाला हमारे को वेंडर चाहिए. क्रॉम्पटन ग्रुप पैकिंग मटेरियल नहीं सप्लाई करता है. Okay, Radhesham Wellpack Private Limited. Correct. Then search name will be Radhesham. Enter the address. Street may be, you can say Nashik Pune Road. Nashik Pune Highway. Okay. Say gut number, this one. Postal code will be 411051. And then you can see here as a MIDC industrial area Chakan. Right? Country will be India. Then this is in Pune, so the region will be 13, Maharashtra. Rest of the parameters you can enter. Right now it is optional, so I don't want to maintain anything here. You can maintain while you are creating vendor master data. Okay, so can we go next? Yes. Kanchan, can we go for the next screen or you want to write it down? Hello? Writing, sir, 2 minutes. Yeah. Just confirm me when you finish it. Can we move for next step? Yes, sir. Okay, enter. Then enter the trading partner here as a DYN GRP. In create vendor control data, enter the trading partner as a DYN GRP. Then you can enter all vendor tax informations. Go to next screen, vendor bank informations. Okay, vendor bank informations, the country will be India. The bank key, here we have the n number of bank key here. For example, these vendors are maintaining their bank account in Bank of Baroda. Select the Bank of Baroda and you can maintain the bank account number as a, so this is the bank account number, and then the account holder will be as a Surendra Sharma. सर बँक अकाउंट नंबर मॅन्युअली टाकला का आपण असा अंदाजे? हो, तो रॅन्डमली टाकलेला आहे. ऍक्च्युअली जेव्हा तुम्ही वेंडर क्रिएट करणार सिस्टम मध्ये तेव्हा तुम्हाला रिअल टाइम मध्ये ऍक्च्युअल टाकायला लागेल. नाहीतर तुम्ही रॅन्डमली जर टाकला तर रॅन्डमली पैसे जातील ते. बरोबर है ना? फिर जिसका अकाउंट रहेगा वो मालामाल हो जाएगा उधर, और जिसको पैसा देने का है वो बोलेगा मेरे अकाउंट में पैसा तो आया ही नहीं. So in that case you have to maintain the proper data. In real time you have to maintain the proper data, check 3 times.
Okay, then go to next screen. Then the first names you can say as a right. Go to next screen. Then this vendor will be reconciled with my GL number, packing material, say 14,002 here. That 14,002. Sort key will be vendor number 012. Okay, and the cash management group as a A1 stands for domestic payment. Correct. Also you can maintain the n number of parameter here. तो ये सब आपको देखने का है. ये हेड ऑफिस भी रहता है इसमें, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको कुछ भी पूछ सकता है ना, आपको पता तो होना चाहिए. इसलिए आप मैक्सिमम टाइम जितना आप, मैंने 4 अकाउंट ग्रुप बनाए तो आपको 4 और 5 वेंडर तो बनाना ही बनाना है. ठीक है. Then go to next screen. Okay, payment terms as of now we are not create any payment term, so we'll not enter it here. Automatic payment transaction not required now also, because we have not done any configurations. So once we have done the configuration, we'll maintain this data. Till then we'll keep it as a blank here. Okay, then go to next screen. Running procedure not applicable. Okay, and this will be the end of the section here. Yes, under my systems create the vendor number. Okay, from where the number range we have assigned in background. We have assigned the number range. If you are not assigned the number range, the system gives the error here. No number range found करके. Vendor number 401899 was created in company code DN10. ऐसा है क्या, हमने कंपनी ये वेंडर क्रिएट किया और बट कंपनी कोड किसी दूसरे का लिया? होगा नहीं, वैसा कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है वैसा होना. So we have 2 vendor. Can we create one more vendor? Okay, so we'll create one more vendor, but we'll change the account group here. We'll change the account group here. Quickly, we'll create one more vendor under which account group? One time vendor तो आपको वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा. Okay, so we'll create one time vendor DN10. Randomly you have to enter some data here. Okay, so it will be company, then you can say as a one time vendor. Okay, so here you can say as a one time, give some random address here. Correct. I'll enter only the country here and the region will be 13. Is enough? Go to next screen. Okay, trading partner will be DYNGRP. Enter some randomly here because it's okay. So this will be this one. Then you can say as a correct. Go to next screen. Okay. Reconciliation account here you can select as a one-time vendor group. Okay. Sort key 012, account group as a A1 here. Correct. For next screen, this is okay, this is okay, and this is okay. So this is my one-time vendor. Now we'll post the purchase transactions. Write down post incoming invoice. Post incoming invoice. Okay, and you can write down the path as a SAP menu. SAP menu. Accounting. Financial accounting. Accounts payable.
Then document entry, and within document entry you can write down these all 4 T code: FB60, F-43, FB65, and F-41. Write down all these 4. Sir, is there any T code? For what? Post incoming invoice. Can you repeat again? Post incoming invoice. Yeah, you can use the T code as a FB60. You can use the T code as a F-43. You can use for credit memo T code as a FB65, and you can use the T code as a F-41 as a credit memo general. In 4 T code, these are the 4 T code for using the incoming purchase invoice. And FB10. इनवॉइस क्रेडिट मेमो फास्ट एंट्री. सो द इसमें एक फास्ट एंट्री का भी ऑप्शंस होता है. सो यू कैन यूज इट, यू कैन ट्राई. आप ट्राई करके देखो, सब ट्राई करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड इन ऑथराइजेशन, यू हैव ऑल ऑथराइजेशन. ओके, so can we use the first T code as FB60? Okay, we'll use the T code as FB60. So double click on FB60 here. Double click on FB60. Okay. Then in FB, when you enter the FB60, then which company codes are activated in my systems in this stage? MH01. So MH01 is not our company code. So our company code is DN10. Now what we have to do? You have to change the company code here. Click on the switch company code. Write down. Click on the switch company code. Then give our company code here as a DN10. DN10, and then say continue. Now you can see here in above also entered vendor invoice as a company code DN10, and here also you can see the company code are DN10, Dynamic Milk Product India Private Limited. Okay, now you will get here the basic data, payment data, details, tax, and notes. Okay, so now under the company code DN10, how many vendors we have created? 3. Okay, so you will get the list if you click on the search option. Click on the search option. Okay, which company code you want to see the detail? DN10. Say continue. Continue. So these are the vendor. So now first we'll select as a L&T. Okay, say L&T. Double click on this. So you will get here only the vendor number. Then we'll consider the invoice date. Today we have the invoice date here. 7. Posted date also today. Yes, today's amount. Now we are not considering any tax parameter here, because we are not done any tax parameter setting, so we'll not consider. When we do the tax parameter,
that time it will be applicable. Okay, so the invoice amount will be 1,25,000. Correct. Then here it will be automatically come under INR based on the company code. You have maintained some parameter in the backend side. From their systems pull the data. Okay, tax, you can say the purchase raw material. Then you have the line item here. GL account. So GL account will be here as a which GL account. I have to suppose select here purchase raw material as a 25,000, which is comes under my profit and loss account. Correct. ये 14,000 1 2 3 4 5 ये जो है हमारा क्या है, ये एसेट साइड है, और ये जो है हमारा ये क्या है, परचेस अकाउंट है ये. सो सिलेक्ट दिस GL अकाउंट 25,000. बाय डिफॉल्ट सिस्टम टेक द डेबिट, बिकॉज हमारा परचेस का एंट्री कैसा होता है आप मुझे बताओ. इफ यू वांट टू परचेज देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंटिटी. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. अब कैश अकाउंट जो बैंक अकाउंट जो था वो हमारा जर्नल वाउचर में था. अब हमारे पास में क्या है, क्या है हमारे पास में, अब हम क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं, तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा कांचन, हमारा परचेस की एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. ओके. अब हमने कैश में नहीं परचेस, हमारे को हमने क्रेडिट पे परचेस करने का है. Then we will enter the company. Sir, यस यस, यू कैन कंटिन्यू. परचेस का एंट्री क्या होता है, क्रेडिट परचेस का एंट्री क्या होता है. purchase account debit to vendor's name रहेगा सर. ओके, तो वेंडर हमारा ये है ना, यहाँ पे ये 40,013 हमारा क्या है, वेंडर है ना. ओके, और ये हमारा परचेस का GL अकाउंट है. 25,000 is the purchase account, GL account. So my entry will be purchase account debit to vendor account credit. Right? So amount of document currency will be 1,25,000, and then the tax also same as a purchase raw material. Okay. Then you have to validate the data. Vendor. So you will get here as a complete vendor address. वेंडर का एड्रेस आ गया, फोन नंबर भी आ गया, बैंक अकाउंट नंबर भी आ गया. ओके, कौन से बैंक में वो भी आ गया, और उसका जो पेमेंट टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स ड्यू इमीडिएटली. व्हाई ड्यू इमीडिएटली, बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज नो पेमेंट टर्म्स आर क्रिएटेड एंड असाइन्ड टू द वेंडर मास्टर डाटा. सो इट विल बी ड्यू इमीडिएटली. सो यू कैन नोट डाउन दिस ऑल एंट्री, all parameter you have to note it down. Correct? Note it down. Take your time and then note it.
Once you finish, just confirm me. Yeah? Kanchan madam. Done? Yes, Meenakshi madam. Done or not? Yes, sir. Okay, so then you can have the simulate, click on the simulate. Once you will simulate, your system gives you the entry overview. You can see here. My document number, see the document types are KR, correct? Then the document number yet to be generated. Company code are DN10. Fiscal year are 2022. Document dates are today's document date and the posting dates are today's posting date. And the periods are 08, being we are entering the transactions in the month of November. So from considering the April, my November will be the 8th posting period. Okay, and the document currency are INR here. And here, whenever you are using the T code as a FB60 or any of 4 T code, systems consider the 31 as a credit. Okay, posting key. PK means what? Posting key. 31 as a credit and GL account number as a vendor account number 401399, and this is the vendor number LNT, sorry, name, and this is the minus. Credit means minus. And 40 for debit, with GL account 25,000 GL account, and GL text are purchase raw material, and this will be debit. Debit means plus. Then you can post it. If you have done all configuration properly, then my system generate document number. You can see the document number 2000 was posted in company code DN10. So like this, I can post n number of document. So I'll post the second transactions also. I'll post the second transactions for second vendor. Okay. You can say as a Radhesham. Correct. I can post backdated entry also. That can be possible. Say we can say the 12th of October. We can say the 12th October. Correct. Amount you can say 75,000. Correct. And then you can say purchase consumable, say packing material, and then the GL account will be here as a purchase. Oh, we don't have this. So we can say the printing and stationery, or we can have the purchase amount. Otherwise, you have to create GL account number. Then, if you want to copy 75,000 as it is, you can say here the star, and then the text will be plus. That means my amount will be copied from this amount field, and the text will be copied from my text field. Okay, enter. Okay, systems ask you, are you entering the correct date? Okay, we know, we purposefully entered it. Okay, yes. Then the net due date will be passed because system check all the parameters. Because as of now, there is no payment terms are assigned. So systems by default considering as immediately. Okay, no, very well. Now you can see this is the Radhesham Welfare Private Limited. Correct. This is bank account number and this will be the entry. If you want to write down, you can write it down. You want to write down, you can note it down.
काय करायचं काय ऑर्डर करून घेतो ऑर्डर करतो कमी येताना भाजी घेऊन चपात्या टाकून येताना भाजी घेऊन घेतो ठीक आहे Okay, click on the simulate. So you will get the same screenshot and then you can post it. See, post it. Correct. So we'll enter one more transactions in one-time vendor, and then if you are entering a one-time vendor, let me check what system asks me. So you can share the one-time vendor. Correct. The date will be same. Amount are say 1 lakh rupees. Tax will be say purchase raw material, and the GL account number will be as a say purchase raw material. Then amount in document currency will be star, and then the tax will be plus. Okay, enter. Enter the vendor information here. One time vendor है ना? तो भरो ये डाटा. हाँ अभी भरेंगे ना हम लोग. So title will be, you can say name. Give any name here. Say Pankaj Stationery. Correct. I am entering only the main parameter. I am not entering here. Correct. Say the road will be Bhosri Road. Okay. Post to city. Bhosri. Pune. Postal code number 411011. Correct. You can enter बैंक की उसका आपको अगर पैसा देने का तो बैंक की एंटर करो, सब कुछ एंटर करो. ओके, एंड देन यू कैन से कंटिन्यू. तो फिर आप वन टाइम वेंडर में कितना परचेस करो, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग यू हैव टू एंटर इट. देन से सिमुलेट एंड देन पोस्ट इट. करेक्ट. So we'll post one more transactions. In again backdated, but we'll take the vendor here. LNT. So my date will be 05/05/2022. Correct. Posting date will be, we can say same 05/05/2022. Amount will be say 1,85,000. Tax will be purchase raw material, and GL account number will be, we can say as a purchase stationery ले लेते हैं. ठीक है. Here star and then put it here as a plus. System check all the parameters. Okay. Okay. And then you can, if you want to park, you can park it. Try to park it. And then try to post it. Try to make some changes. And then post it. Say you can say as a simulate and then post it. 3. We have posted 3 documents. Okay, so we will post one more document. Say same vendor will consider, and the date will be 23rd/06/2022. Correct. Again here as a, I will give you 23rd June. Amount will be say 95,000. The tax will be say purchase consumable,
and the GL account number will be as a purchase raw material. Then say star and then plus. Okay, it checks all the parameters and then simulate and then post it. Right, if I'll go, my T code is FBL3N, I'll open the another sessions, FBL3N, and then I will say all items, and you can see here, see total raw material purchase group में अभी देखिए हमने कितना परचेस किया है, 4,05,000 का परचेस किया है. पैकिंग मटेरियल ग्रुप में हमने कितना परचेस किया है, 75,000 का परचेस किया है. करेक्ट, ये आपका लायबिलिटी है, इसको हमने ये रिकंसिल होगा आपका वेंडर के साथ में. जब इसका आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा. ग्रीन हो जाएगा तो क्या होगा, परचेस किया, पैसा दिया, काम खत्म. तो एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट, इफ द मैनेजमेंट आस्क यू, ओके, तो हमने परचेस रॉ मटेरियल कितना पैसा देने का है, हमारे को 4,05,000 देने का है. पैकिंग मट ये तो लाइब्रेरी, ये तो बैलेंस शीट में लिया है, ये तो स्क्वायर अप हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वन टाइम वेंडर में से 1 लाख रुपीज इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग. कैनरा बैंक में हमने अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया हुआ है. एंड देन दिस इज योर एक्चुअल परचेज रॉ मटेरियल. ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. करेक्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज आल्सो योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट, एंड देन दिस इज योर ट्रायल बैलेंसिंग मैच हियर. राइट, देन इफ आई वांट टू, चलो ठीक है, ये हमने परचेज तो कर लिया, अब हमारे को इसका पेमेंट करने का है. सो राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप एज पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट. पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट. FBL3N3 कोड कशासाठी वापरतात? सी कुठला F-43? नाही FBL3N आता वापरला तो. तुम्हाला जर रिपोर्ट बघायचा असेल तर यू कॅन यूज द टी कोड FBL3N. Okay, now you can write down the, okay, suppose you are using the T code as F-43. So once you are using the T code F-43, it will be purchase entry. We'll try it. So double click on F-43, but the screen will be different, effect will be same. Screen parameter will be different. Correct. Document date we can say 07/11/2022. Correct. First line 31 for what? You can have the complete posting. 31 for what? You can give here. See here. 31 for invoice. Okay, invoice. Account will be here as a vendor. Which vendor? You can say as a Radhesha. Write down. If you are using the T code F-43, then the screen will be in this way. If you are using the keyboard, F-43. Here you can see document date, today's document date. Here you can see the type, document type as a KR. When you are posting the transactions in purchase, so document type will be KR. Then the company code are DN10. Posting dates are today's date, periods are 8, and the currencies are INR here. Then the first line item, posting key 31. This is the account. Account means the vendor GL account number. Okay, go to next screen.
amount, you can say amount as 85,000, say 85,000. Text, you can say purchase raw material, say purchase raw material. Then the next line item will be, ये होगा हमारा क्रेडिट होगा, अभी डेबिट क्या होगा 40 डेबिट. कौन सी GL अकाउंट को? So the GL account will be as a purchase raw material. So select the purchase raw material. Note down this one. Right? Then go to next screen, put the star and the text will be plus. It will copy the amount from amount column and the text from text column. And then you can post it. Say click on the post, my systems will generate the next document. So how many documents we have posted? 4 to 5 documents we have posted. Okay. If you want to see, अब हमारे को और वेंडर को कितना पैसा देने का है. If you want to see the report, then you can see the report as a SAP menu, accounting, financial accounting, accounts payable. Then you can have the information systems. Under the information systems, you can have the reports for accounts payable. Okay, you want to see the vendor balance. This is a T code. If you click it as a vendor balance, then you can have the vendor balance in local currency. Execute. Enter the company code as a DN10. Okay, DN10. And then you can have the multiple parameter. इसमें से आप कोई भी पैरामीटर यूज करके डाटा सर्च कर सकते हो. Okay, say execute. You can see here L&T को कितना पैसा देने का है, 4,05,000 रुपए देने का है. राधेश्याम को कितना पैसा देने का है, 1,60,000 देने का है. वन टाइम वेंडर का कितना पैसा देने का है, से 1,60,000 देने का है. ओके, ये हो गया टोटल क्लोजिंग बैलेंस का रिपोर्ट्स. अगर मेरे को लाइन आइटम वाइज देखने का है तो यू कैन हैव द एंट्री हियर एज ओके बिजनेस. सो यू कैन गो एज अ लाइन आइटम, वेंडर आइटम्स, लाइन आइटम्स, कंपनी कोड DN10. ओके, तो L&T को जो पैसा देने का है 4 लाख रुपए, वो एक इनवाइस का है, 2 इनवाइस का है या 3 इनवाइस का है, वो कैसे पता चलेगा? सो दीज आर द रिपोर्ट. यू कैन एग्जीक्यूट एंड यू कैन सी हियर L&T you have a 3 invoice outstanding. Correct? Radhesham, you have a 2 invoice outstanding. And then in one time vendor you have 1 invoice outstanding. Clear? Yes, anyone have the doubt for online? Let me check. Okay, Ruchira madam, is it clear? Yes, sir. Meenakshi madam? Yes, sir. Hello.
Is it clear or any doubt? Okay, so today we'll stop it here and tomorrow we'll make the payment process. Okay, so come with the questions. Question के साथ में आओ. Okay, so okay, see you, bye bye and good night.